Good morning, everyone. Good morning. Good morning. जो भी डाउट्स है पूछ लो. We'll start this training in 2 minutes. कल के स्ट्रीमिंग में मजा आ गया. नहीं नहीं. Same action plan. No changes. 1 hour के वॉल्यूम फॉलो करो ना. What is the direction? What market is currently giving? So followed through that, executions will be taken under the consideration. Good morning, Viraj. नहीं, एक बार नीचे आने दो, उसके बाद जाने दो. डायरेक्टली नहीं. करंट एलजी कैंडल को कवर कर लेने दो. वो 1 आवर का इंटैक्ट कंप्लीट करने आ रहा है ऊपर उतना है. स्टेबिलिटी दिखाने दो ना मार्केट. जैसे ही स्टेबिलिटी दिखाएगी, प्लान ऑफ एक्शंस देकर रहेगा. इससे पहले ना. ठीक है. 15 मिनट में नया कैंडल आने वाला है. सो लेट्स कीप इट सिंपल. डोंट ओवर एग्जैजरेट द ट्रेड ऑफ एक्शन प्लान. ठीक है. सर, एक्सनेस में डिपॉजिट ऑप्शंस यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग नहीं दिखा रहा है. ड्यू टू कंपनी ट्रांसफर हो रही है करेंटली. स्टेट ट्रांसफर्स, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स अलाउड नहीं है. क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस के थ्रू देख सकते हो. ठीक है.
ए कैंडल रेड में क्लोज होना चाहिए, कमिंग कैंडल इंटैक्ट होना चाहिए, इंटैक्ट के साथ फॉलो थ्रू में अगर प्लान ऑफ एक्शन दिखती है तभी लॉन्ग, उससे पहले नहीं। अगर ये डायरेक्ट मूवमेंट दे रहा है, आई एम ओके विद इट। ओके, लॉन्ग के लिए अभी सेटअप फॉर्म नहीं हुआ है। जो कल के दिन में ट्रेड चल रहा है वही ट्रेड है। पूरा एलजी पॉइंट कवर होना चाहिए यहाँ तक, 85। नहीं, विक क्रिएट करके आ रहा है, विक है इसमें, छोटा सा, बट विक है। This is not a conversion point, so don't look for a conversion executions of allocation. कन्वर्जन के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे मैपिंग होगा इन पर्सपेक्टिव ऑफ टू द प्रीवियस, जो कि स्टेबलाइज्ड अलोकेशन में आती है डायरेक्शनल मूवमेंट के थ्रू। सो प्लेसमेंट विल बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन ऑफ 1 आवर, नॉट ऑफ 15 मिनट्स, बिकॉज 15 मिनट्स में सप्लाई अलोकेशन पॉइंट नहीं है henceforth. Okay, so what you will be doing is you will be waiting patiently for an execution. Good morning, Raj. So without that, no plan of executions will be taken under the considerations. 4507 तक अगर इंटैक्ट होके मूवमेंट डेवलपमेंट में आती है तो, कंटिन्यू करती है तो भी वही टारगेट है। So don't plan out random executions. A small request. So let's start with the screening. 1 hour. What is 1 hour indicating at the current stage? कल के दिन में पूरा मार्केट एक स्टेबलाइज्ड मोमेंट में थी,
राइट, फॉलोड विथ अ रिजेक्शन प्लेटफॉर्म जो हमें दिखाया था शॉर्ट की तरफ। शॉर्ट होने के बाद जो गैप अप पेंडिंग था, गैप अप कवर करके एलजी पॉइंट जो हमें चाहिए था वो एलजी पॉइंट हंट होने के बाद लिक्विडिटी डाइल्यूशन के साथ मार्केट ने डेवलपमेंट लॉन्ग की तरफ दिखाया था। राइट, plan of action: high volume indication on first candle of red, second confirmation on this movement of the candle, right? Followed through, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है मोमेंटम, एंड स्लो एंड स्टडीली आइसबर्ग जोन में डेवलपमेंट आई है। सो जब मार्केट आइसबर्ग जोन में डेवलपमेंट आई है, आज के दिन में अगर क्या नोटिस कर रहे हो, ऑन दिस कैंडल वाज द हाईएस्ट वॉल्यूम, जो कि रिट्रेस हो चुका है मार्केट, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल सेम लाइन ऑफ अलोकेशन के साथ डेवलपमेंट दिखाया है। करेक्ट, जब सेम लाइन ऑफ डेवलपमेंट मार्केट ने दिखाया है, व्हाट इज द प्लान दैट वी शुड बी लुकिंग फॉर? ओके, market has tend to showcase a movement towards a short, but the pressure of buying is also equivalent to the same because of the intact level which is pending at the point of this, right, which is 4507. Henceforth, the immediate reaction on towards the buy is created at this current certain point of level. With this, what are the next major things that will be taken under the considerations? We'll come to 15 minutes. In 15 minutes, there are only few things that you have to be very careful about in order for an execution, right? Followed through S2B1 formation हुई थी short completion के बाद, and in continuity two level of allocations, three wing setup formation and S2B1 was formed, and movement direction till the surplus 100% allocation. 100% होने के बाद sustain दिखाया था, but selling pressure के साथ दिखाया था। Henceforth, first come first serve on the break of the level was taken under the consideration for the mapping. आज के दिन में फर्स्ट डिमांड मैपिंग कहाँ से अलॉट होगा? सो दिस वाज द फर्स्ट डिमांड मैपिंग, 100% ब्रेक एंड कंटिन्यू, henceforth 150% में एक रिजेक्शन दिखने को मिली थी, एंड इन कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट we have taken a surplus allocation which was this demand, right, wherein 200% से market rejection लेके buying allocation develop होते हुए दिखा था। जब यहाँ पे buying allocation develop होते हुए दिखी थी, what are the few major things that you have to keep in mind at the current stage? Right, rejection done. Do we have a setup at the current stage? No. Let market in next 5 to 10 minutes आके सस्टेन करने दो, सबको शॉर्ट की तरफ बिठाने दो, देन ऑन ए कन्वर्जन ऑफ एन इंटैक्ट एस टू बी वन इंटैक्ट हम लॉन्ग की तरफ प्लान ऑफ एक्शन देख सकते हैं, नॉट प्रायर टू दैट। टिल देन जो ऊपर से शॉर्ट है एमटीएसएल के साथ जो फॉलो अप में है, वही ट्रेड ऑफ एक्शन में रहेगा, नॉट एवरीवन। No running candle executions will be taken under the considerations at the current point. Any doubts, guys? Good morning, Arya. Good morning, Shrikant. So, जब तक सेटअप नहीं फॉर्म होती है, शांत बैठे रहना। सर,
ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ 100% ಆದ್ಮೇಲೆ 150 ಅಲ್ವಾ. नहीं surplus if the market sustains above 100% with the directional pressure, then only we will be looking for a 150% allocations, not prior to that. Okay. If the market is showcasing a volume pressure at the level of surplus 100%, right? If the volume pressure is showcased in between the surplus moments, then 100% will be the first target range. Okay. So that is the allocation what we should be looking at. If the market is in the direction and it has given a break of 100% and volume is in iceberg zone, then the continuity of the moment will be towards 150%. Okay, Nanithan. Good morning, Suresh. Beautiful execution of the trade which you had taken in the morning. Good job, sir. Not really, Ambika. अगर डेवलपमेंट में मेरे को इंटैक्ट भी मिलता है 1 आवर का तब देखेंगे, उससे पहले नहीं. I'm totally okay with it. ಕನ್ನಡದಲ್ಲ. So just for an example, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ 50% ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ 100% ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಈ ಸಪ್ಲೈನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 200% ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ಫೋರ್ತ್ ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೇಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, 50% ಹತ್ರ ಹೋಗಿ 100% ಹತ್ರ ಹೋಗಿನೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ 100% ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೋ ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 150% ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ನಿತಿನ್? So that is the plan of action which you will be following. Good morning, Nitesh. Is it necessary that the price should create initial liquidity for the move to sustain? Dilution always it creates, no? So लोगों को मोह माया में भी तो रखना है उसे. If it creates that formation, then yes, definitely the first plan of action will be taken under the consideration of a liquidity. Yet, if the market has created a pressure of selling, then the movement will be indefinite in the directions without creating any dilutions nor a diluted point of liquidity. The same scenario was created yesterday, right? So if you look into the perspective, open yesterday's live stream. From this point of actions, we were looking for 200% target for this. Okay. Post this, what did market tend to do? We were looking for again a movement towards the 95, which got developed at this point with an S2B1, right? Post development,
what were we looking for? First gap up closure, because daily time frame didn't had created a wick. Henceforth, this short trade was looked in a directional movement without following any kind of dilution. So this is a diluted movement towards a captured allocation of the previous Asian session, right? So this motion was taken under the entire diluted point. Henceforth, the movement was one directed without any retracement formation, right? Once the liquidity and LG point was grabbed at the previous, what did market do? Created a setup formation, and now it's in the direction, right? So in this direction, if this movement had to come down to take out the third day, which is day before yesterday's movement, which will be allotted with the LG points, for that it has to take the liquidity of 4507 and then continue the breaker. Once that breaker is taken under the consideration, we could have planned the next movement. So at the current stage, if the market gives us that formation, then only. Else, from this entire test of V1, we will be looking for long. Reason for long, daily candle has no reasons because it has already created the wick. एंड मार्केट थोड़े देर के लिए रेंज बाउंड में खेलेगा तो भी खेलेगा, बट दैट रेंज बाउंड विल बी ऑफ 250 pips. Okay, sir, when S2B1 forms with the biggest first candle price, sometimes comebacks to tap the first candle, then how should we execute? Yeah, S2B1 formation is looked in perspective of that, no? Are you? Without the joy of free development, market won't move. So just for an example, this is a formation. Okay, I've taken one trade. That risk is mine. But what will happen if your capital is small and execute the trade? Because I know the moment of dilution is still here. So have the risk appetite to capture it. So if you're having a lot size of $1,000, and if you're looking for an extensions of a moment, and you have executed that trade over here with a zero point 0.1 lot, and you're letting 100 pips negative motion, first thing, your mindset will be diverted. Second thing, your depreciation of the capital will start, right? And once the depreciation starts in the capital, your mindset will work on to the proportion of recovery. So when it gets into the recovery stage, then you tend to lose whatever you have earned so far. Henceforth, wait for the third candle for execution as a beginner. Beautiful Kannada explanation, sir. Thank you so much, Shrikant. How can we differentiate between the internal liquidity and minimality? Depends on which scenario you're talking. If the scenario of minimality is formed with a proportion of an diluted range, then we will look for a minimality plan of action. If the market has created a substantial allocations without any dilution in the directions, then we will look for internal liquidity.
in your terms. Okay. अगर $100 है मेरे पास, $100 मैं यहाँ पे डालूंगा लॉन्ग की तरफ, तो $700 बनेंगे। डालो। रिस्क है तो इश्क है। कैन यू टेक दैट रिस्क? That's the reason, Vasha, I said you don't on the chats for public. Interested person will subscribe and text. Put the message. Can you show an example if possible? Same scenario is over here, right? So, yesterday's trade off action only will take, right? So, in Asian session, what do we notice? The proportionate liquidity graph candle was created, gap up was there, internal liquidity zone of dilution was created, right? With this plan of action, we had got a movement development, right? So when the movement was in the development, what is the first plan of action that will be taken under the consideration on this mapping of red candle? First come first serve, first come first serve, first come first serve, all 200 persons were break and continue, correct? So we'll take a second serving which is placed in this proportionate, right? So in this proportionate angle, what do you notice? First angle point, again 100% rejection. Second angle point, a minimality M2 formation and continuity in the movement, right? So कल के दिन में हम क्या बात किए थे? Wick create नहीं हुआ था, means the dilution was taken under the play. So at this range of motion, we'll come to 1 hour, right? So in this 1 hour proportionate, what is the first movement that we'll be looking for a plan? The plan of action will be taken under the consideration of this moment, because this allocation we have taken it through 15 minutes. When this movement is taken under 15 minutes, the first come first serve will be played with this zone, right? So with this zone of motion, liquidity graph point, with that, the dilution liquidity, both were at the same place. So henceforth, what you will be doing is you will play a role where the development is looked for, right? Keeping in mind 100% is a retailer support zone over here. So what does the movement do? The movement will tend to hunt out, right? So they will all look for a long. If you notice, in this same point of range, you could see one small rejection, right? अगर notice कर रहे हो यहाँ पे rejection दिखा है, यहाँ पे rejection दिखा है. So all the major small players could look for a long at this point, wherein always the dilution will be the first propaganda to hunt out. So this should be the plan of action. So in the same scenario, what do we notice over here? Can we take minimality plan of action over here? Can we take minimality plan of action over here? No. Why? Because LG was created just beneath the point, right? Henceforth, the market movement was till that LG point and then the continuity. You just have to observe the market. Sir, I meant the first candle body in yesterday's long trade. It's almost 120 pips. If the market has given the indication of a movement towards a long and you have entered with three wing setup, first execution will be on the closure of this, right?
And when the market doesn't come down in the movement towards a short, why will you look for 120 pips range? As simple as that. Allocation of the point range is simple. As a beginner, it will be 50 pips, 40 to 50 pips New York session. But if you're entering with the right setup, that 100 to 120 pips range, what you're talking, will never come to a play because the market could directionally move in the direction. Okay. What's your motivation? Money. पैसा ही सब कुछ नहीं होता. How many meals do you eat a day, man? मतलब don't take it personally. कितना मील खाते हो? भोजन. 3. फ्री में आता है ग्रोसरीज. नहीं, 15,000 की है. नाइस. कहीं जाने के लिए you use transportation, let it be public, let it be car, two wheeler, whatever it is. बुलेट चलाता हूँ. पेट्रोल फ्री में आता है. बुलेट फ्री में आई. घूमने का इरादा तो होता है. बहुत इच्छा है घूमने की, लेकिन घुमाने वाला नहीं. खुद कमाओ, खुद घूमो. घुमाने वाले के पीछे क्यों पड़े? खुद कमाओ ना. कब तक किसी और की कमाए पे जियोगे? इट्स नॉट. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर पर्सनल. डोंट टेक इट पर्सनल. सेफ ट्रांजैक्शंस करना है तो ट्रस्ट वॉलेट. अगर पूरे दुनिया को बताना है तो बाइनेंस. 50,000 की EMI है. क्यों लिए थे EMI? भाई साहब, कैसे कैसे लोग हैं.
गोवा को किसी को लेके जाने के लिए XYZ पर्सन के लिए आपने लोन लिया। वाह। एंड आप बोलते हो पैसा सब कुछ नहीं होता है। सही है। दाद देनी पड़ेगी। इंटैक्ट होने दो, इंटैक्ट से पहले प्लान ऑफ एक्शन हम नहीं देख रहे। क्यों, आपके पास कोई लोन नहीं है क्या? वी रन ए शो विद नो लोन जोन। So far, no loans. We earn it, we enjoy it. Yesterday, gold in 1 hour case, there was initial liquidity at 8 UTC, which was covered at 11, and also created another internal liquidity at 11, only which was taken out by 1 before going for the big down move, but it didn't breach the day high. So, my question is regarding the last liquidity graph happened at 13. How to avoid such moves and know it in advance. Step by step. How the volume can, how the volume can, message नहीं लिख रहा है. Help here. Because indication propaganda is being showcased, no? So reason, why are you looking for a hunt? So अगर यहाँ पे तुम hunt के लिए देख रहे हो, that is a very wrong proportionate of the zone which was being identically looked at the proportion of this zone, right? Which is 4496. Why? Prior to that, there is an intact point. The market is taken rejection from the intact zone, right? So the movement plan structure was always taken under the henceforth range of not hunting each and every time. Because the daily candle विकी नहीं क्रिएट किया था, अगर विक क्रिएट किया होता तो सिनेरियो अलग होती. You're getting the point. उसे हम कहते हैं डिस्प्यूट. कोई डिस्प्यूट मोमेंट कवर अप में आज के दिन में कंप्लीट हुआ ना. आई वाज थिंकिंग सर बोलेंगे नैनो लोन पे निकलवाया है. नहीं नहीं. आप कितने कमाते हो? 6000 per minute. So that's 3,60,000 per hour. Yes. 24 hours, it's 86 lakhs 40,000 change. That's the average number.
Post deductions of all the capex and opex, in-hand profit is of 35,786 from one business. कम नहीं हो गया, बहुत कम है और बढ़ाना है उसे। रात खत्म होने तक हमेशा गले में दिखना चाहिए एटलीस्ट 10 करोड़ दिन का। दैट इज फन। Currently at 4.5. 2026 that will also happen. सर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है? हमेशा याद रखना महेश, सॉरी राज, इफ द मूवमेंट इज इन द फॉर्मेशन, राइट, ये हमारा सप्लाई हो गया, राइट, उसके साथ एक रिट्रेसमेंट आई, इस रिट्रेसमेंट के साथ कंटिन्यूटी में डेवलपमेंट आया, ओके। So when this development got into the play, what do we notice? We got one more retracement. Okay. So this range of motion, right? हमारे पास दो सप्लाई है. So इस दो सप्लाई में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सप्लाई कौन सा है? ये वाला, right? So in proportionate to this, we will map the new supply of arena to play around. जितना ये मूवमेंट रहेगा मैथमेटिकली उतना ही मूवमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट में दिखेगा. सेम वे लाइव में देखना चाहते हो तो ये जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सप्लाई है, पोस्ट इंटैक्ट मैपिंग यहाँ पे दिखने को ऐसा. So this is the first come first serve allocations what you will be looking. That's 25 euros a month. हाँ, post removing opex capex and all भी बात करना, and that earning is not in India, so the expenditures and all is on the higher side. Zurich में in hand. This is not from trading. नहीं, it's not from trading. Trading earning is next level. हजम करने के लिए भी 3-4 दिन लगेंगे. And 90% of the population को तो लगेगा फेक है. So money is very small, right? Let it be 10 digits, let it be 11 digits. It's very easy.
सर प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ बताओ, प्रीवियस एग्जांपल्स के साथ बताओ। ओके, राइट। रिट्रेसमेंट के साथ सप्लाई, रिट्रेसमेंट। सो ये मेरा फर्स्ट कम है, ये मैं नहीं लूंगा। तो ये वाला मैपिंग मेरा यहाँ पे मैप होगा, राइट। ब्रेक एंड कंटिन्यू दिखाया, henceforth continuity for the moment। ओके, एज अ बिगिनर यू कैन डू वन मोर थिंग। रेड रेड बीच में है, दो सप्लाई है, कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कौन सा सप्लाई है, ये वाला। तो ये वाला मैपिंग पे आएगा। दिस विल बी मैप्ड इन प्रोपोर्शनेट टू द न्यू allocation। ओके, 100% रिजेक्शन। प्लेसमेंट यहाँ पे मिनिमलिटी है करके मत बता देना बाद में, सरप्लस पॉइंट है उसके लिए। वी क्रिएट रेसिपी सारे। सर yesterday 1:30 PM पे S2B1 सेटअप एक्सप्लेन कर दे प्लीज। 1:30। ये वाला ना, हाँ, रेंज ऑफ मोशन, कैंडल क्लोजर 1 followed with the second candle, right? Pressure identification नहीं हुई थी, so hence IG chart was showcased in red, Exness was showcased in red, followed through third candle with an intact execution। Okay, सर ये 1 आवर में ही देखना है ना, 15 मिनट्स। स्विंग ट्रेडर हो तो 1 आवर, आईडी में 15 मिनट। सर आप सच में शॉर्ट में हो? वो एग्जाम्पल दे रहा था भाई। सेटअप फॉर्म का हुआ, सेटअप फॉर्म होने दो। आई वाज एक्सप्लेनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड, कौन मैनेज कर सकता है कौन नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा? We are not a service sellers to have a website. We are creators of recipes, which is formed in the basis of patents, and contracts are signed in the name of hotels. So we can't present ourselves. That's the first key rule of culinary. अंबिका वॉल्यूम लो करो यार। सुबह सुबह क्या गाना सुन रहे हो? दूसरा गाना नहीं मिला?
So development, first come, first serve allocation, break and continue, minimality M1 form, 150% rejection with 150% rejection. Reformation of the cloud with selling pressure, first come completed, 200%. Henceforth, second serving, this one will be taken under the consideration. Remapping the structure, high wick ranger, henceforth taken into the play. Break and continue, 200%. With 200%, what do we notice? Intact completion. With the intact completion, allocation of first come, first serve will be played in the zone. First come, first serve will be taken under the consideration of this movement, which will be mapped under the high wick range. So mapping will be with the wick. Break and continue, continuity, 200% rejection. With 200% rejection, first come, first serve demand will be played. With the demand allocation, what is the rule? This is the movement and this is the placement. What you will be looking at. His zone is at intact. If the market sustains in this level with the formation of a setup, continuity in the movement, henceforth the drop to the dilution of 200%. Okay. रिस्क ले लेना चाहिए था. अगर 10 पिप के चक्कर में तो रिस्क देख रहा है, देन भूल जाओ. 30 पिप हो गया सर. If multiple internal liquidities are created, then how many of them will be covered before reversal? Is it to be looked in a perspective of 15 minutes or 1 hour, depending which chart you're working on? Or TF doesn't matter and higher TF allocations should be matched against the liquidity. TTS 2.0 should get allotted in the movement, not prior to that. छोटे छोटे मूवमेंट से खुशियां मत मनाओ जनाब. बड़े बड़े टारगेट्स अलॉट करो, उसके बाद मनाओ खुशियां. आप लोग क्लोन कर लेना. यहाँ पे मिनिमलिटी मैप नहीं होगा क्योंकि ये 1 आवर का सप्लाई है. ठीक है. ब्यूटीफुली डन. You're not getting FOMO? No. Why will I get FOMO? चलो यार, इसके आगे 700 पिप्स जो हमारा स्विंग ट्रेड चल रहा है उसका TSL यहाँ पे है, तो समझो कितने का मोमेंट होगा. पॉसिबल allocations मैं सिर्फ इधर तक ले रहा हूँ, TSL तक 1000 pips. So will I cry for this 30-40 pips? No. आज का शॉर्ट का ट्रेड ही हमने क्लोज किया है. 50% MTSL लेगा.
but 50% of the trade we closed it good. So no dilutions will be taken under the control. All the new members, whichever strategy, whichever rule, whichever concepts you're following, it doesn't matter to me. Make sure you do it for 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis. Come with a smaller capital, compound it, develop the funds with following a proper risk to reward ratio and removing fear, greed, and FOMO from the mind. It's your hard earned money. Don't give it to anyone to trade, nor follow any tips. Learn before you earn. आपकी माइंडसेट से, आपकी एग्जीक्यूशंस, आपकी एनालिसिस से होनी चाहिए, तब जाके जीतने की सुकून, हारने के दुख महसूस करने में मजा आएगा. दिस इज नितेश साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.